देखो सीपीओ रो डिस्कशन टिके कर दो हम क्वेश्चन पॉलिटी रो केमिस्ट्री रो अछि करना तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन से कौन कहूँ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज एंड द कैंडिडेट्स टू बी फॉलोड ड्यूरिंग इलेक्शन ड्यूरिंग इलेक्शन तो इटर आंसर कौन होबो laid down in the Constitution of India, specified in the Representation of People Act, enjoined by the Supreme Court, a voluntary agreement among the recognized political parties. देखो जेतବେଳେ तमे model code of conduct कहूছো what do you mean by that model code of conduct ता माने कोन जेतବେଳେ तमे model code of conduct करबो गोटे मिनिट ले ता माने होची जे जेतेबेले तमरो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन जेतेबेले तमरो इलेक्शन ता चलीबो ना इलेक्शन चलना बेलकू तमरो कोन हबो ना जो पार्टीज गुडा अछंती दे शुड मेंटेन ए डेकोरम the parties should maintain a decorum and what do you mean by that decorum हला एया जे जेतेबेले तमरो इलेक्शन चली थिबो जेतेबेले वोटिंग चली थिबो ठीक अछि ना तो वोटिंग चलला बेले गोटे गोटे माने गोटे स्पेसिफाइड रेडियस अछि से रेडियस बाहर से माने कोन करिवे से माने ताकर प्रोपेगेंडा जहां भी चले आसी चलेबे बुझ पड़ो से माने दे कैन डू देयर एडवर्टाइजमेंट किंतु ता भीतर को से माने आस्पेरिबेनी अदरवाइज देयर विल बी सम कैंसिलेशंस ठीक अछि फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग कोन ना तो इलेक्शन रो जो से माने ताकर एडवर्टाइजमेंट उडा करिवे ठीक अछि तो जो अनाउंसमेंट्स उडा करिवे सेडा सब कोन ना सेडा गोटे स्पेसिफाइड टाइम थिबो से स्पेसिफाइड टाइम भितरे ही से माने ताकर अनाउंसमेंट्स उडा करि परिबे ताकर एडवर्टाइजमेंट उडा करि परिबे ठीक अछि सेमते नंबर 3 रे तमरो कोन हे परिबो ना जो माने भी अछंती जो माने भी तमरो जो पार्टी रे सब रहिबे जो इलेक्शन रे रहिबे तो से माने कोन करिवे ना दे कैन नॉट से जो कोन देनी मद दबा तापर तमरो पैसा दबा से सब से जिंसडा को हबो नाही तो ये जो कोड ऑफ कंडक्ट अछि ये कोड ऑफ कंडक्ट इफ एनी पार्टी इज वायोलेटिंग ताहले then that party will be disqualified from contesting the elections बुझ पालो तो ये जो कांसेप्ट गुडा थिला हमर ये कांसेप्ट गुडा आगुरु कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन नाही इट वाज रिप्रेजेंटेड और इट वाज स्पेसिफाइड इन द आरपीए एक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 एई एक्ट रे तमरो लेखा हला जे केमिति को बडा को पार्टी केमिति भाबरे तमरो कोन डेकोरम मेंटेन करिवो दैट वाज प्रेजेंटेड इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 आ गोटे कथै मन रखो ये जो एक्ट तमे कहूचो ये जो एक्ट तमे कहूचो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट इट आल्सो मेंशंस कि जो तमरो इलेक्शंस प्रोसीजर जो अछि राज्य सभा रो इलेक्शन प्रोसीजर हो लोकसभा रो इलेक्शन प्रोसीजर हो ठीक अछि को कंडीशन रे बुझो को कंडीशन रे द ए कैंडिडेट कैन बी डिस्क्वालिफाइड ठीक अछि एटा तो इलेक्शन प्रोसेस हला ए कैंडिडेट कैन बी डिस्क्वालिफाइड माने सपोज गोटे कैंडिडेट कोन हिची ना ही हैज फाइल्ड हिज नॉमिनेशन किंतु परवर्ती मुहूर्त रे जणा पड़ला कोन ए नॉमिनेशन फाइल करबा टाइम रे सपोज ही हैज बीन जेल्ड कंटीन्यूअसली फॉर 2 इयर्स बुझबो नै ही हैज बीन जेल्ड कंटीन्यूअसली फॉर 2 इयर्स ताहल ताको डिस्क्वालिफाई कर दिया जिवो इट हैज बीन मेंशन इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 ठीक अछि सेकंड थिंग कोन आउरी कछु मेंशन हिची ना सपोज गोटे सिटिंग एमएलए और सिटिंग एमपी if he is involved in some activities social inhuman activities like ki se dowry nela ki any hate speech dela ठीक अछि ए सब जदी एक्टिविटी की कम्युनलिज्म को स्प्रेड कला ताहले ए जो एक्टिविटीज गुडा अछि ये एक्टिविटीज पाई मध्ये ही कैन बी डिस्क्वालिफाइड बुझि पाछो ना नै तो ये सब लिखा है जे तमर कोठी इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और आरपी एक्ट 1951 किंतु एठी गोटे क्वेश्चन एटा भी आसी पारे जे कोन ना तमरो जहां भी सब डिस्क्वालिफिकेशन अछि द फाइनल डिसीजन एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे आसे द फाइनल डिसीजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन is in the hands of president बुझ पलो एटा इंपोर्टेंट is in the hands of president after consultation with election commissioner बुझ पलो ना एटा इंपोर्टेंट एटा आसे परीक्षा रे प्लीज रिमेंबर दिस जो फाइनल डिसीजन हबो जे भाई के डिस्क्वालिफाई हबो तो एटा रो डिसीजन के नेबे से एमपी हो कि एमएलए हो दैट
that decision will be taken by the president and he will consult whom? He will consult the election commissioner. अच्छा जेतेबेले लिखा हबो election commissioner, please remember the election commissioner means what? Central election commissioner, not the state election commissioner. ठीक है? Why? Because the central election commission is concerned with the election process of Lok Sabha, Rajya Sabha, president, vice president, state legislative assembly and council. बुझिपारछ नहीं तो ही इज माने तमरा जो तमरा सेंट्रल एटा को आर्टिकल में लिखा है एटा दिस इज मेंशन अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोठी इलेक्शन कमिश्नर और तम कहि परिबो सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर दे आर कंसर्न विथ द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ दिस गाइस बुझिपारलो दिस बॉडीज बुझिला समस्तंगर तो एई जो कांसेप्टटा तुम मन रखिबो द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स टू बी फॉलोड ड्यूरिंग इलेक्शन is specified where is specified in the Representation of People's Act 1951 ठीक अछि नेक्स्ट देखो गुड मिनट नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन देखो एटा फर्स्ट क्वेश्चन आंसर ले एटा सेकंड क्वेश्चन देखो हु इज द चेयरमैन अमंग हु इज द चेयरमैन ऑफ लोक सभा सहज क्वेश्चन जेतल तुम कहउछ हमरो जेतले लोक सभा हमें कहउछ आर्टिकल 93 बुझो आर्टिकल 93 कोन मेंशन कहउछ ना द आर्टिकल 93 लिखा है कोन ना द स्पीकर ठीक अछि अबाउट द स्पीकर बुझला आर्टिकल 93 रे से स्पीकर विषय लिखि छी एटा सहज क्वेश्चन जे हु इज द चेयरमैन ऑफ लोक सभा ता हमें आंसर दबो कोन तो एठी बुझु जिंसटा कोन जेतले तुम स्पीकर कहउछ जेतले तुम स्पीकर कहउछ आर्टिकल 93 प्रथम क्वेश्चन हैला कोन स्पीकर इज appointed or elected फर्स्ट क्वेश्चन स्पीकर इज appointed or elected मन रखिबो स्पीकर इज व्हाट स्पीकर इज appointed बुझ पालो स्पीकर इज सॉरी स्पीकर इज elected हैला ताले हु इज appointed ना मन रखिबो फर्स्ट हैला प्रोटेम स्पीकर इज appointed क्लियर प्रोटेम स्पीकर इज appointed प्रोटेम स्पीकर और टेम्पररी स्पीकर कहि परिबो प्रोटेम स्पीकर इज appointed स्पीकर इज व्हाट स्पीकर इज elected and who conducts the election process of speaker na protem speaker conducts the election process of speaker बुझ पालो प्रोटेम स्पीकर इज अपॉइंटेड अच्छा प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट किए करिवे द प्रोटेम स्पीकर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बुझला प्रोटेम स्पीकर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड स्पीकर रो जो इलेक्शन ता हबो हु इज स्पीकर किए स्पीकर हला आउट ऑफ द 543 मेंबर्स ऑफ लोक सभा बुझला आउट ऑफ द 543 मेंबर्स ऑफ लोक सभा one member is elected as speaker तो एठी मन रखिबो जे नॉमिनेटेड मेंबर्स कैन नॉट बी इलेक्टेड एज स्पीकर और नॉमिनेटेड मेंबर्स कैन नॉट बी ए स्पीकर इन द लोकसभा काहे कि ना हमर लोकसभा रे टोटल स्ट्रेंथ होची 545 out of 545 two members are nominated by the president they are anglo indians so the anglo indians who are nominated they cannot be appointed as the speaker they cannot be elected as the speaker clear so out of the 543 members of lok sabha one member is elected as speaker and who conducts the election process of the speaker now the pro tem speaker conducts the election process of speaker and after the speaker is elected the work or the role of pro tem speaker ends then and there बुझला तमरो स्पीकर जेतले इलेक्शन सरी जीवो इलेक्शन सरला परे प्रोटेम स्पीकर आउ किछि फंक्शन नाही केतले क्वेश्चन आसे ना हु इज द प्रोटेम स्पीकर ना प्रोटेम स्पीकर इज द डेप्यूटी स्पीकर नो प्रोटेम स्पीकर इज नॉट डेप्यूटी स्पीकर ही ओनली प्रोटेम स्पीकर एंड हिज रोल इज टिल द स्पीकर इज इलेक्टेड when the election process of speaker is over then the role of protem speaker completes बुझियला मन रखिबो ए क्वेश्चन डा आसुची प्लीज रिमेंबर दिस हैला ना नेक्स्ट तापर स्पीकर कोन करिवे बुझो स्पीकर कोन करिवे ना स्पीकर विल कंडक्ट इलेक्शन फॉर डेप्यूटी स्पीकर बुझियला
speaker will conduct election for deputy speaker, and he will also choose a panel of speaker, and he will also choose a panel of speaker. বুঝিপারছ? আচ্ছা তুমি কইব না স্যার এই যে প্যানেল অফ স্পিকর ইয়াকৰ কাম কোন না প্যানেল অফ স্পিকর ର কাম এয়া যে সেমানে যদি তমর কেতବେଳେ এমতি क्वेश्चन আসে দেখো মু ସବୁ ପ୍ରକାର क्वेश्चन ର ଅପସନ ମୁଁ ଏଠି କହୁଛି, ପ୍ଲିଜ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ରିମେମ୍ବର ଅଲ ଦିସ୍ थिंग्स जो माने देखुଛ आ जो माने ପରେ ଦେଖିବ ସେମାନେ এই ସବୁ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ନା। ଯେତେବେଳେ ତମର ସ୍ପିକର ସପୋଜ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ପିକର ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତ who will be the speaker of Lok Sabha? The deputy speaker of the deputy speaker will act as the speaker of Lok Sabha. Now suppose both speaker and deputy speaker both are absent, जदि तमरो speaker और deputy speaker दी जन जाको absent अछंती, then who will be acting as the speaker and deputy speaker? Now from this panel of speaker, ये जो panel of speaker अछि, ये panel of speaker जहार नंबर 1 रे थिबो, जहार ना नंबर 2 रे जहार ना थिबो, से माने कोन करिवे, they will be acting as the speaker and deputy speaker. बुझि पालो? These are some of the functions of speaker. A speaker will conduct election. Speaker will conduct election for deputy speaker. Speaker will choose a panel of speaker, and how छोट-छोट functions जो अछि कोन? The speaker is the only one who will sign the money bill, and after his signature only the president will give assent before the money bill is introduced in the Lok Sabha. बुझि पड़लो नै? money bill Lok Sabha रे introduce हबा पूर्वरु हला ना, लोन money bill Lok Sabha रे introduce हबा पूर्वरु it requires the prior permission of the president. बुझला? किंतु president केमिति जानिबे जे that bill is money bill or not? What he will see that whether the speaker has given his signature or not. If the speaker has given the signature, then only president will give the permission that the money bill can be introduced in the Lok Sabha, and after it is introduced, then it will go to Rajya Sabha and the process continues. आमी जानिते से विषय बुझी पल्लो ना? तो आंसर हो कोन? हु इज द चेयरमैन ऑफ लोक सभा? स्पीकर इज द चेयरमैन ऑफ लोक सभा. हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्य सभा? एंड तमरो राज्य सभा रो की चेयरमैन होबो ना? जनरली वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्य सभा. बुझिला? एंड रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर दैट वाइस प्रेसिडेंट जो सैलरी तमरो पा दी, that salary he gets because he is the chairman of Rajya Sabha, not because he is the vice president of India. Which question na? This is mentioned in the constitution. Clear? The first question answer हमें जानले कोन? The model code of conduct for political parties and the candidates to be followed during election. Answer हबो कोन? Specified in the Representation of People Act 1951. Second question है who is the chairman of Lok Sabha? Speaker. सहज question, but जति को discussion करूची, those questions जोड़ा discussion करूची, those are important. Please remember all these things. हैला ना? Next, which one of the following article empowers the president to appoint Prime Minister of India? Answer will be Article 75. बुझला? आर्टिकल 75 बुझुटी. आर्टिकल 75 तुम जदि कहउछो बहुत पिलांकर मन रे थाए ना, प्राइम मिनिस्टर इज, क्वेश्चन भी आसीबी, प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड और अपॉइंटेड. प्लीज रिमेंबर दैट प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड. हला? स्पीकर कोन कहली? स्पीकर इज इलेक्टेड. ठीक है ना? स्पीकर इज इलेक्टेड, एंड हु कंडक्ट्स द इलेक्शन process of speaker? तमरो प्रोटेम स्पीकर कंडक्ट. Similarly, prime minister is elected or appointed. The prime minister is appointed, and who appoints the prime minister? President appoints the prime minister. बुझला? ए छोट छोट जिंस उडा टिके टिके मन रखिबो, कारण एई क्वेश्चन उडा को ही सहज लागिवो, किंतु ठीक बेलकु तम भूल भाल आंसर मारि आसी. बुझला ना? कारण हम मन भीतर थाए ना, प्राइम मिनिस्टर कोन ना हमरो इलेक्शन, तमरो इलेक्शन हेची तो इलेक्टेड, but prime minister is appointed. ए जो मन रखो, ए जो appointed process of a prime minister by the president, that is which power of president कोई परिबो? जो माने भी देखुचो, जदी भी देखुचो, which power of the president is this? Appointment of prime minister. मन रखिबो, this is what? This is your executive power of the president. एना जत्तक सब तुम देखियो appointment process गुडा अछि, that appointment process are the executive powers of the president. बुझला? Executive powers of the president. तो हमर एक जो आर्टिकल हम देखिले, which one of the following article empowers the president to appoint prime minister of India? That will be Article 75. मन रखियो, जो प्रोसेस टा भी तमरो हुए, से प्रोसेस टा तमरो केमिति हबो ना? फर्स्ट तमरो कोन रहिबे ना, फर्स्ट तमरो मेंबर्स विल बी, तो तमरो लोक सभा मेंबर्स गुडा अछंदी, they will be elected. इलेक्शन प्रोसेस होइबा. ठीक अछि?
इलेक्शन प्रोसेस सरला परे बुझ जो माने तमरो कोन करथिबे ना जो माने सब तमरो गवर्नमेंट फॉर्मेशन हेइथिबो जो माने मेजॉरिटी पाइथिबे हैला ना सेही मानकर किछि सीनियर मेंबर्स से माने कोन करिवे दे विल बी गिविंग ए लिस्ट कोन लिस्ट देबे ना ये हमरो लीडर हबो ठीक अछि एंड दैट लिस्ट विल बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट बुझला तो ये जो लीडर जी हबो ताकर और से लीडर ही तमर कोन हबो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हबो and that list will be submitted to the president and president kon karibe na president will give the signature in the appointment letter of that leader and when the president gives signature that leader will function as what that leader will function as prime minister buchi parlo that leader will function as the prime minister of india ठीक अछि and जेतोले तमरो प्राइम मिनिस्टर अंगर अपॉइंटमेंट प्रोसेस सरी जीवो prime minister will now give prime minister not the senior members now the prime minister will give a list again to the president prime minister पुण गोटे list देबे आ ये जो list रे कोन थिबो he will be giving the members who will be heading some cabinets or some portfolios and those members are called what those members are called council of ministers it article 74 रे मेंशन हिच so the council of minister they are what they are also appointed by the president prime minister and council of ministers they both are appointed by the president ଆଉ ତମେ ଯେତେବେଳେ council of minister କହୁଛ and what do you mean by that council of minister ରହିବେ କୋଉ ମାନେ ନା council of minister number 1 ରେ ତମ କରିବେ କଣ prime minister number 2 ରେ deputy prime minister this is not mentioned in the question sorry तमर sorry this is not mentioned in the constitution बुझला एटा भी क्वेश्चन आसे जे तमरो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर is mentioned in the constitution or not remember deputy prime minister is not mentioned in the constitution but deputy prime minister consists a position in the list of council of ministers बुझला तापर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर पर के आसीबो कैबिनेट मिनिस्टर्स आसीबे जो मानको को इंपोर्टेंट पोर्टफोलियो सब दिया आइथिबो एंड व्हाट डू मीन बाय पोर्टफोलियो मींस ए चार्ज और एन ऑफिस बुझला तो प्राइम मिनिस्टर रहिले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहिले कैबिनेट मिनिस्टर रहिले तापर तमर की रहिबे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर परे मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज हैला जो माने इंपोर्टेंट मिनिस्ट्री हेल्ड करथिबे से माने रहिबे मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज नेक्स्ट लास्ट तमर की रहिबे minister of state these are what these are junior ministers who works under the cabinet minister ठीक अछि minister of state they are the junior minister who works under the cabinet ministers बुझिए हला this is all about your prime minister and council of minister ठीक अछि तो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर हला कोन स्पेसिफाइड इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट क्वेश्चन नंबर 2 आंसर हला कोन स्पीकर क्वेश्चन नंबर 3 आंसर हला कोन आर्टिकल 75 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो ये सब जगह हमें डिटेल्ड डिस्कशन कले ठीक अछि ना काइंडली तुम टिके एटा को भलसे देखो हला नेक्स्ट देखो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली formed by the drafting committee ठीक अछि ना द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली formed by the drafting committee of Indian constitution on केपे तमरो ड्राफ्टिंग कमिटी फॉर्म हेतला तो देखो मन रखिबो जेतो तुम ड्राफ्टिंग कमिटी कहउछो ड्राफ्टिंग कमिटी रो जो आईडिया ता थिला जे द कॉन्स्टिट्यूएंट माने से माने कोन करथले ना जो कॉन्स्टिट्यूशन केमिति लिखा हबो कोन हबो तो सेही विषय जो आईडिया ता थिला गोटे मिनिट से विषय जो आईडिया ता थिला से आईडिया ता को कमिटी करिवो that was given that charge was given to the drafting committee which was set up on 29th August 1947 please remember this date एटा पिला कंफ्यूज होंदी तमे कंफ्यूज हो नाही 29th August 1947 रे the idea that the drafting committee which will draft the constitution that was formed and it was formed under the chairmanship of B.R. Ambedkar हैला B.R. Ambedkar अब एठी ड्राफ्टिंग कमिटी तमरो 7 मेंबर्स वे देयर समस्त नाम लिखुची एटा परीक्षा आसे तमे भी मन रखिबो ठीक अछि नंबर 1 7 members drafting committee was constituted of 7 members of drafting committee number 1 रे B.R. Ambedkar रहिले he was the chairman of drafting committee ए drafting committee रो ही मेंबर्स मानको मन रखिबो हैला नंबर 2 रे तमरो अल्लादी
कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक अच्छे। नंबर 3 एन गोपाल स्वामी है, ये मन रख। नंबर 4 के एम मुंशी। नंबर 5 मोहम्मद सदुल्ला। नंबर 6 बी एल मित्तर। नंबर 7 डीपी खैतान, है ना, এটা মনে রাখিও। These 7 were the members of drafting committee, है। बी आर अम्बेडकर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, के एम मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, बी एल मित्तर एंड डीपी खैतान, ठीक अछि। ये जो साधारण से क्वेश्चन केमते आसीबो, व्हिच अमंग द फॉलोइंग वर नॉट द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, ठीक अछि ना। तो ये सातटा तमे जाहली मन रखियो। एंड हु वाज द chairman of the drafting committee? B R Ambedkar. The drafting committee was set up with the idea that they will draft the constitution. Our constitution, how much time it took? It took 2 years 11 months and 18 days, है ना। 2 years 11 months and 18 days was taken to complete the whole process of the constitution, बुझिला ना। अच्छा, आउट कांसेप्ट कोन एटी देखो, एटी आंसर हैला 29 अगस्त 1947, ठीक अछि। इस आंसर हम देखि छै, हैला। आउट क्वेश्चन एटी कासे, हु पुट फॉरवर्डेड द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एटा भी क्वेश्चन आसे। हु पुट फॉरवर्डेड द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रा आइडिया को फॉरवर्ड करथला, कि देई परिबे आंसर जदी दियो। एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, हैला। इन 1934 he was the pioneer of putting forward the idea of constituent assembly, है ना। प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, तो ये आंसर उड़ा सब देखो। नेक्स्ट देखो, which of the following exercised the most profound influence in framing the Indian constitution, हैला। जो तमरो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करा हैतला, मन रखिबो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, हैला। It is referred as the major source of Indian constitution. और यार मेन फीचर भी थमर थिला कोन ना, मेन फीचर थिला, it gave the idea of फेडरलिस्ट, बुझला। फेडरलिस्ट जोटा कि आज का डेटा तुम कहू कोन, थ्री लिस्ट। ये थ्री लिस्ट माने तमरो कोन रहइबो, ये थ्री लिस्ट माने तमरो सेते बेले कोन थिला, सेते बेले तमरो यूनियन लिस्ट जोटा तुम कहूछो सेटा तमरो फेडरलिस्ट, तापरे तमरो स्टेट लिस्ट हम कहउतले प्रोविंशियल लिस्ट, हैला। आ थर्ड तमरो थिला कंकरेंट लिस्ट, बुझला। फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। अच्छा, जदि फेडरल लिस्ट कहउछो आज का डेट से फेडरल लिस्ट को हम कोन कहउछे, यूनियन लिस्ट, हैला। यूनियन लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट को हम कोन कहउछे, स्टेट लिस्ट, और एटा ना कंकरेंट लिस्ट। तो एटा मन रखियो ठीक है, ठीक अछि। हैला। तो which of the following profound exercise the most profound influence in framing the Indian constitution? Answer will be your the Government of India Act 1935. This is your answer, हैला। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, in which article,
ready na? In which article of the Constitution of India has the joint sitting of Lok Sabha and Rajya Sabha has been provided? Article 108. देखो जेतरा article 108 कहउछो मन रखियो article 108 mentions about what joint session. अच्छा मन रखियो ये जो joint session हबो मन रखो joint session is always done with respect to which bill. हमर जो तीनटा बिल अछि मनी बिल अछि तमरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अछि ऑर्डिनरी बिल अछि जॉइंट सेशन टा को बिल पे हबो जॉइंट सेशन टा सब बेले मन रखो इट विल ऑलवेज हैपन फॉर द ऑर्डिनरी बिल और विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी बिल. अच्छा जॉइंट सेशन हुए केमतिया ना जत्ते बेले तमरो कोन हबो ना लोक सपोज गोटे बिल अछि हला ना से बिल टा तमरो लोकसभा को गला देन इट गोस टू राज्यसभा देन इट गोस टू द प्रेसिडेंट. ठीक अछि एटा प्रोसेस टा कार बिल केमिति को प्रोसेस से फ्लो करे तार प्रोसेस एटा. अच्छा किंतु एटी कोन हबो ना बिल मने करो लोकसभा रे बिल टा कोन हला पास हे गला बट राज्यसभा रे पास हो नै और वाइस वर्सा राज्यसभा रे फर्स्ट जाईची राज्यसभा रे पास हे गला किंतु लोकसभा रे पास हो नै. this condition is called what? This condition is called deadlock condition or deadlock situation. ए कंडीशन को हम कोन कहंती दैट इज कॉल्ड डेडलॉक सिचुएशन. ठीक अछि तो ये जो डेडलॉक सिचुएशन टा होउची तमरो ठीक अछि ना जो डेडलॉक सिचुएशन सेही टाइम रे मन रखो ना द president will हला the president will summon both the houses that is Lok Sabha and Rajya Sabha. बुझला प्रेसिडेंट को करिए समन करिए प्रथम कथा. सेकंड कथा कोन हबो ना समन कर सला परे who will question जैसे जहां जहां क्वेश्चन आस कहूची who will preside over the joint session. मन रखियो ना joint session is presided by the speaker of Lok Sabha. ठीक अछि एंड मन रखो जॉइंट सेशन रे पार्टिसिपेट को माने कर परिबे ऑल द मेंबर्स एठी इलेक्टेड भी रहिबे आ नॉमिनेटेड भी रहिबे. ऑल द मेंबर्स ऑफ लोक सभा एंड राज्य सभा विल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ all the members of Lok Sabha and Rajya Sabha in the process of joint session. हला तापर जॉइंट सेशन रे जो बिल टा तमरो पास हबो एटा को मेजॉरिटी रे पास हबो दैट सेटा भी तमरो ଗୋଟେ क्वेश्चन आसे हला ना को मेजॉरिटी रे पास हबो तो सेटा तमरो सिंपल मेजॉरिटी रे पास हबो. बुझला सिंपल मेजॉरिटी रे पास बुझ पालो ना ये था तमरो तो एठी आंसर हबो इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द joint sitting of the Lok Sabha and Rajya Sabha has been provided. Article 108. Hala next a money bill passed by the Lok Sabha is deemed to have been passed by the Rajya Sabha a money bill passed by the Lok Sabha is deemed to have been passed by the Rajya Sabha also when no action is taken by the upper house within. माने कोन त हम जानछन्ती मनी बिल कोन मनी बिल हम जानछन्ती कोन मनी बिल ना मनी बिल ता हला मनी बिल कंटेन्स व्हाट जेता हम कहिबो त मनी बिल त हमर कोन रहबो ना इट कंटेन्स एप्रोप्रिएशन बिल नहीं एप्रोप्रिएशन बिल थाए आ कोन थाए फाइनेंस बिल थाए. हमर एठी कोन करिवे ना तमे देखो मन रखो मनी बिल हमर चारि प्रकार रो बिल कहि देबे. चारि प्रकार रो बिल कोन ना मनी बिल भी अछि फाइनेंस बिल भी अछि ऑर्डिनरी बिल भी अछि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी अछि. सेमिति होबनी तमरो मनी बिल जो आर्टिकल 108 रे मेंशन हेछि सॉरी आर्टिकल 110 रे मेंशन हेछि 110 रे मेंशन हेछि त आर्टिकल 110 रे से कहूची कोन ना मनी बिल कंटेन्स एप्रोप्रिएशन बिल प्लस फाइनेंस बिल इंपोर्टेंट है मन रखियो रे.
अच्छा जब तुम एप्रोप्रिएशन बिल कहउछो ये एप्रोप्रिएशन बिल रे होची कोन मन रख एप्रोप्रिएशन बिल रे एया हबो ना जो एक्सपेंडिचर गुडा अछि ना से एक्सपेंडिचर पई वोटिंग तो हबो ना से एक्सपेंडिचर में तो वोटिंग करिवो तो वोटिंग ता कोन पई कहउछे ना भाई मते कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रु पैसा नबार अछि एंड दैट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ता लिखा हेछि कोठे आर्टिकल 267 रे मेंशन हेछि बुझला आर्टिकल 260 266 रे तमरो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ता मेंशन हेछि हमर जानछन हम तीन प्रकार फंड अछि गोटे तमरो पब्लिक फंड अछि और तमरो कंसोलिडेटेड फंड अछि हैला ना पब्लिक फंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पब्लिक फंड ऑफ इंडिया आउट हला कंटीजेंसी फंड ता तमरो को आर्टिकल रे मेंशन हेछि आर्टिकल 267 रे मेंशन हेछि पब्लिक फंड और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को आर्टिकल रे मेंशन हेछि ना आर्टिकल 266 रे मेंशन हेछि बुझला तो जेतो तमे कहूछ तमरो कंसोलिडेटेड फंड रे आमे जो टैक्स गुडा को पेमेंट करूचे से टैक्स सब तक पैसा जाउची कोठी की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को जाउची तो सेथुरु जदि तमे किछि पैसा खर्च करबा को चाहुचो यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द पार्लियामेंट पैसा की खर्च करिवो ना भाई जो माने रूलिंग पार्टी अछंती बजट थ्रू रे से माने परमिशन लेबे फ्रॉम द पार्लियामेंट तो से जो एक्सपेंडिचर कोडा हबो से एक्सपेंडिचर का करेक्ट अछि ना नाही ता पे तुमको कोन करे पड़ो यू हैव टू पास एप्रोप्रिएशन बिल अच्छा एप्रोप्रिएशन बिल पास हैला परे देन इट विल गो फॉर फाइनेंस बिल बुझला तो ये दीटा को बिल मिसिले ही तमरो कोन हबो मनी बिल हबो आर्टिकल 110 ठीक अछि जानि परलो मनी बिल कोन जिसला अच्छा एट देखा हो जेतो तमे मनी बिल कहउछ ना मनी बिल रहउछ तमरो कोन ना कला गुटी की लोकसभा रे सबले मन रखो मनी बिल पड़ जो लोकसभा रे ही इंट्रोड्यूस होबो फर्स्ट लोकसभा रे इंट्रोड्यूस हला लोकसभा रे तमरो डिस्कशन हला लोकसभा रे सेटा वोटिंग भी हे गला वोटिंग हे चला परे मनी बिल ता लोकसभा रे पास हे गला ता परे लोकसभा रो से जीवो कोठी की राज्यसभा को एंड प्लीज रिमेंबर राज्यसभा डू नॉट हैव द वोटिंग पावर इन केस ऑफ द मनी बिल एंड विद इन 14 डेज 14 दिन भितरे भाई मनी बिल ता मते कोठी पास करियर अछि प्रेसिडेंट पाखु दबार अछि बुझला 14 दिन भितरे प्रेसिडेंट को दबार अछि और यू कैन सेंड इट बैक टू द लोकसभा जानि पला ना तो ये थिला तमरो कोन मनी बिल रो कांसेप्ट तो जो क्वेश्चन पचला हेलो a money bill passed by the Lok Sabha is deemed to have been passed by the Rajya Sabha also when no action is taken by the upper house within 14 days 14 दिन भितर भाई तमरो माने सपोज तुम भाबो एबे राज्य सभा ले कोन कले रिकमेंडेशन किछि देले जे मनी बिल रे ए चेंजेस गुडा का आनो मन रखिबो लोकसभा इज नॉट बाउंडेड बाय दोज रिकमेंडेशंस भाई लोकसभा से रिकमेंडेशन को मानिबनी लोकसभा डायरेक्ट पठे देबो का पाकू प्रेसिडेंट पाकू पठे देबो बुझबल्लो लोकसभा डायरेक्ट पठे देबो प्रेसिडेंट पाकू कोन ना भाई ये मनी बिल आसिला ताकू साइन दियो आ प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज असेंट प्रेसिडेंट कैन नॉट यूज हिज वेटो पावर इन केस ऑफ मनी बिल बुझला प्रेसिडेंट अगर वेटो पावर ही कैन यूज इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स or private bills सेठी से veto power use करि परिबे but in case of a money bill president cannot use his veto power बुझ परलो तेनु लोकसभा वाला जेतले प्रेसिडेंट बाकु से मनी बिल ता पठेई देबे प्रेसिडेंट देखिबे तमे भाबो ना सर एते सर जॉइंट सेशन हे परिबो कारण राज्यसभा वाला रिकमेंडेशन दैछंती राज्यसभा रिकमेंडेशन दैछि लोकसभा से रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करेनी तेनु प्रेसिडेंट तो एक कथा जानिबे जे राज्यसभा वाला रिकमेंडेशन को लोकसभा एक्सेप्ट करनी ताले प्रेसिडेंट कोन करिवे can president call for a joint session or not no joint session खाली डका हे परिबो को केस रे only in the case of मन only in the case of ordinary bill बुझ परलो देखो लिंक करी करी पाठ पढिले हबो हमर कांसेप्ट नला हबो टेंशन लागो तुमको लिंक करो सब जिंस को तुम लिंक करो ताले हबो हला बुझ परलो समस्ते तो आंसर हबो तमरो कोठिला 14 डेज मनी बिल विषय जति हमर आईडिया थिला हम कहि देलु आ मनी बिल ता सब बेले को मेजॉरिटी रे पास हुई दिस इज आल्सो ए क्वेश्चन मन रखियो मनी बिल इज ऑलवेज पास थ्रू ए सिंपल मेजॉरिटी हला क्लियर वेरी गुड द क्वेश्चन नंबर 7 द आंसर हला बी देखो क्वेश्चंस ना 7टा है कि जति की डिस्कशन हमें कलेनी ना जति की
कॉन्सेप्ट हम डिस्कशन करनी जणा जदी पॉलिटिक्स किछि भी जानिनी से एती कॉन्सेप्ट धरिले भी से बहुत आइडिया पाइ जे पूरा धीरे धीरे पढौची ठीक अछि ना जो माने परवर्ती मुहूर्त रे भी एक वीडियो देखिबो काइंड रिक्वेस्ट वीडियो को बढ़िया से देखि कि देखो आगो निज पॉलिटिक्स खाता को पढ दबो पढि साला परे ये वीडियो डा को भल से देखि कि तार क्वेश्चन उडा को तुम निजे निजे कर दियो हम पूरा कंक्रीट डिस्कशन भी कर दो जेठी तो तुमको किछि असुविधा हबो नाही हला नेक्स्ट देखो who among the following is or are not appointed by the president of India हमरे हम एबे तो मु कहली संगे संगे जे जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस अछि ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस अछि दैट अपॉइंटमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट तो कोन कहदी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट को आजे हला अच्छा जे तुम एग्जीक्यूटिव पावर कहउछो एग्जीक्यूटिव पावर रे तमरो कोन रहउछि प्रेसिडेंट को जो एग्जीक्यूटिव पावर अछि से एग्जीक्यूटिव पावर कोन रहउछि ना प्रथम रहइला तमरो अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नहीं अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम गोटे मिनिस्टर तापर तमरो कोन रहइबो ना तमरो जो यूपीएससी रो चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ताकर अपॉइंटमेंट प्रोसेस ता भी तमरो रहइबो कोन तमरो एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ठीक अछि यूपीएससी रो चेयरमैन एंड तमरो अदर मेंबर्स सेमतिया जेपीएससी रो चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ताकर भी अपॉइंटमेंट प्रोसेस रहइबो काहे अंडर रे एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर रहइबो बुझि पालो अच्छा किंतु एठी देखो बुझो ये सब तमरो एग्जीक्यूटिव पावर रहला पावर्स तो मोर प्रेसिडेंट को गुडाय अछि गुटेला एग्जीक्यूटिव पावर गुटेला जुडिशियल पावर मिलिटरी पावर डिप्लोमेटिक पावर दीस आर ऑल द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट तो क्वेश्चन एटा भी तमरो आसी परिबो जे व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द डिप्लोमेटिक पावर ऑफ द प्रेसिडेंट तो से सब तक पावर यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स बुझला सेम थी ना एबे तम कहबो ना सर चीफ जस्टिस आउ चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट इमाने एउडा को भी तमरो कोन एग्जीक्यूटिव पावर जीवो की ना एउडा को सब तमरो एग्जीक्यूटिव पावर जीवोनी एउडा को तमरो जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट जीवो बुझला जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट को पावर रे जीवो ना एउडा को सब तमरो जीवो एग्जीक्यूटिव पावर वाइस प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट बुझ पालो नहीं तापर चीफ जस्टिस तमरो गवर्नर हां इट इज ए क्वेश्चन कोन पचाछि इट इज ए क्वेश्चन पचाला हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट भाई नॉट अपॉइंटेड पचाछि त मन रखिबो कोन तमरो गवर्नर चीफ जस्टिस जजेस ऑफ हाई कोर्ट वाइस प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस आंसर होबो कोन वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुझला वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इज इलेक्टेड बुझला ई ताकर इलेक्शन प्रोसेस ता कोठी हबो इलेक्शन प्रोसेस ता तमरो राज्यसभा बुझला ये तमरो को पावर हैला जुडिशियल पावर ये भी तमरो कोन हो जुडिशियल पावर ठीक अछि दिस इज योर एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर ऑफ स्टेट्स ये तमरो एग्जीक्यूटिव पावर इज क्लियर 8 नंबर आंसर हो कोन सी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जानिला तो जो पावर उडा को तुम मन रखिबो गोटेला तमरो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट डिप्लोमेटिक पावर ऑफ प्रेसिडेंट मिलिटरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट ठीक अछि ये these are all some powers of the president which you have to remember individually है ना अच्छा सेही गोटे देखो गोटे थाए आर्टिकल 143 ठीक अछि मन रखा आर्टिकल 143 रे कोन होची आर्टिकल 143 रे सुप्रीम कोर्ट हैला ना सुप्रीम कोर्ट गिव्स और सुप्रीम कोर्ट कोई जेमते कहि परिबो ना सुप्रीम कोर्ट गिव्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट हैला आर्टिकल 143 लिखले सुप्रीम कोर्ट गिव्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट एटा को कहि परिबो advisory jurisdiction of supreme court एटा तुम कहि परिबो तो एटा तमरो को पावर ऑफ द प्रेसिडेंट रे जीवो आर्टिकल 143 टा इट इज व्हिच पावर ऑफ प्रेसिडेंट प्लीज रिमेंबर आर्टिकल 143 इज द जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एटा भी तमरो जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट जीवो देखो इट इज वेरी इंपोर्टेंट कि जते को पावर अछि ताको इंडिविजुअली ताको मन रखियो तमे बाध्य बुझला फसी जीवो न जदी न फरिबो से कारण सब तक अपॉइंटमेंट प्रोसेस आर ऑल द अपॉइंटमेंट प्रोसेस आर नॉट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट बुझ पड़छ नै जे तमन को सेबे कहला आर्म फोर्सेस रो जो चीफ गुडा को अछंदी आर्मी नेवी एयर फोर्स तारो जो चीफ गुडा को अछंदी दे आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट but that doesn't mean it goes under the executive power it goes under the military power of the president
बुझला तो सब तक अपॉइंटमेंट प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट अपॉइंटमेंट प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट पावर रे जाउची तो तमे सब तक मन रखे बाध्य हैला तो 8 नंबर आंसर होला कोन सी 7 नंबर आंसर होला 14 दिन तापरे 6 नंबर आंसर होला 100 हैला नेक्स्ट देखो द चीफ इलेक्शन कमिश्नर आमे देखिले आर्टिकल 324 रु 329 ए रे पर्यंत तमरो लिखा हिची का विषय रे इलेक्शन कमिश्नर विषय रे लिखा हिची आर्टिकल 324 रु आर्टिकल 329 ए मेंशन्स अबाउट द इलेक्शन कमिशन हैला तो से पचारला द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड्स द ऑफिस कितने टर्म्स फॉर 6 इयर्स और अप टू द एज ऑफ 65 इयर्स कोन या माने कोन बुझो या माने कोन या माने हला जे मने कर जणे इलेक्शन कमिश्नर हला एट द एज ऑफ 52 हला 52 रे हला ताले से केते दिन जाय कंटिन्यू करिवो ही विल कंटिन्यू फॉर 6 इयर्स दैट इज 52 + 6 58 इयर्स तापर सरला ठीक अछि किंतु जणे जदी 62 इयर्स रे इलेक्शन कमिश्नर हला ताले से केते वर्ष करिवो ना से भाई 65 पर्यंत ही करिवो ताकू ता तब 6 ऐड करी 68 करि परिवो नाही whichever is earlier से सही पे लिखला for 6 years or up to the age of 65 years बुझियला ना नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 सरी गला क्वेश्चन नंबर 10 देखो the tenure of every panchayat है ना the tenure of every panchayat shall be for 5 years from the date of कौन हबो the declaration of एटा गोटे डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स ठीक अछि एतरे बुझिबार किछ नाही नेक्स्ट चलो नेक्स्ट देखो व्हाट डज आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से हमें जानि छंती आर्टिकल 14 रु आर्टिकल 18 एटा कोन राइट टू इक्वालिटी नहीं तापर आर्टिकल 19 रु आर्टिकल 22 एटा राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 23 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये आर्टिकल गुडा को मन रखिवो जो माने भी पॉलिटिकल क्लास के भी करिछो से माने आर्टिकल गुडा को मन रखिथियो बोली आशा करूची आर्टिकल 25 रु आर्टिकल 28 ठीक अछि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हला आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 एटा हला कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ठीक अछि एंड आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल ठीक अछि ये जत्ते को कहले हमें ये सब जगह कोड मेंशन हेची ये सब तक तमरो फंडामेंटल राइट्स को पार्ट रे मेंशन हेची पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल केते रु केते रहइबो आर्टिकल 12 रु आर्टिकल 35 केते रहइबो हमें एठी खाली राइट्स को देखिछथि हला ना अच्छा देखो तो सेतो तमे कहूचो आर्टिकल तमे कहलो कोन आर्टिकल 14 रु आर्टिकल 18 राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 कोन कहूची प्रोटेक्शन अगेंस्ट तमरो कोन ना आर्टिकल 14 हला राइट अगेंस्ट एमती कह परिबो राइट टू इक्वालिटी दैट इज everybody will be provided with equal rights हला से मिनिस्टर हो कि जे हो समस्त इक्वल राइट्स दिया लिखा है आर्टिकल 15 रे कोन कहै छी ना there will be some special provisions हला there will be some special provisions to the SC ST and economic backward class ठीक अछि माने कोन ना जो डिस्क्रिमिनेशन मन रखो आर्टिकल 15 कहूची there will be no discrimination prohibition of discrimination माने तमे जदी जनकू किछि प्रोवाइड करूची गवर्नमेंट देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू किछि भी माने कोन ना जो तमरा पब्लिक गुड्स गुडा को अछि ठीक अछि ना तो से पब्लिक गुड्स जहां भी प्रोवाइड करूची से पब्लिक गुड्स गुडा रे डिस्क्रिमिनेशन हबो नाही या तो प्रोविजन रे और डिस्क्रिमिनेशन को बेसिस रे हबो नाही कास्ट बेसिस रे रिलीजन बेसिस रे सेक्स बेसिस रे डिस्क्रिमिनेशन हबो नाही
But remember, there will be special provisions which will be provided to the SC, ST and economic backward class. ठीक अछि सेमति आर्टिकल 16 भी सेया कहला आर्टिकल 16 कहला कोन ना the employment opportunity or public employment opportunity will be provided to all irrespective of the caste or sex बुझला आउ एबे तो तमरो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रे तमरो कोन आगुर थिले मेन थिला वुमेन थिला एबे तो ट्रांसजेंडर्स के आसी माने दे कैन आल्सो वर्क इन द गवर्नमेंट और द पब्लिक सेक्टर्स ठीक अछि आर्टिकल 17 कोन कहूची आर्टिकल 17 कहूची एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हैला एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जेतो तुमे अनटचेबिलिटी कहूचो अनटचेबिलिटी रे तमर रहूची कोन ना जो सिविल राइट्स गुडा रहूची if somebody is माने को एटा मानु नाही if somebody is denying all these things ताहले सिविल राइट्स एक्ट द्वारा ताकू अनवेलेबल वारंट यूज इशू हेजिबो बुझला दैट इज वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल 17 तो एठी हमर क्वेश्चन से पचाची व्हाट डज द आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज मन रखियो अनटचेबिलिटी इज abolished ठीक अछि the practice of untouchability is forbidden eta ठीक अछि practice of untouchability is an offense by the civil rights act तो एठी आंसर हो कोन all of the above मन रखियो हैला सब तो आंसर क्लियर बुझि पालो समझते नेक्स्ट आर्टिकल 18 भी देख दवा आर्टिकल 18 कोन कहूची आर्टिकल 18 कहूची माने तमर जो रैंक गुडा को अछि ना you cannot use the ranks in public माने ranks in public माने कोन जो अवार्ड तुमको दिया है छी माने सपोज तुमे पद्म भूषण पद्म विभूषण भारत रत्न ई सब जो पाइछो you cannot use those awards you cannot use that name publicly by the help of this article माने तुम जदी कहबो मु पद्म भूषण माने शाहरुख खान कहि देला पद्म भूषण शाहरुख खान बुझलो तो सेटा तुमे पब्लिकली तुम मूवी रे ताकू यूज करि परिबोनी हां यू कैन यूज तमरो गोटे जो स्पीच भी छला सेठी तुम यूज करि परिबो बट you cannot use also this name who name suppose तुम कहलो सर लॉर्ड तुम रैटक्लिफ कहि देलो माने एटा आगुरु थिला किंतु एबे तुम ये सर जोटा ना पूर्वरु जो सर लगाई छी सेटा तुम कहि परिबोनी ना परे सर लगा ना पूर्वरु सर लगेले एटा डिस्क्रिमिनेशन हे जीवो लोक तुमको रेस्पेक्ट देबा आराम करिवे दे विल डिस्क्रिमिनेट यू विथ अदर पीपल बुझला तो सेठी संबंध को तुमको अधिक रेस्पेक्ट दिया हिजो हां तुम डॉक्टर यूज करि परिबो पब्लिकली यूज करि परिबो तुम ना पूर्वरु डॉक्टर हो इंजीनियर हो सेटा तुम पब्लिकली यूज करि परिबो बट यू कैन नॉट यूज दिस नेम लाइक सर बुझियला बुझ परलो हां आउ कोन ना जो तोर मिलिटरी रैंक्स गुडा को अछि मिलिटरी रैंक्स गुडा को सेउडा को तुम पब्लिकली यूज करि परिबो यू कैन से योरसेल्फ कि मु मेजर श्याम हो कि मेजर राम हो तुम सेटा करि परिबो बुझियला सेटा पब्लिकली तुम यूज करि परिबो यू कैन आल्सो यूज इन द मूवीज बट पद्म भूषण पद्म विभूषण एउडा को तुम यूज करि परिबोनी कोठी मूवी रे तुम यूज करि परिबो नाही हला दिस इज अबाउट आर्टिकल 18 हला तो what does article 17 of the constitution says answer of kon all of these untouchability is abolished practice of untouchability is forbidden practicing untouchability is an offense ठीक अछि नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 एटा एबे हमें डिस्कस करले who is the supreme commander of the armed forces in india कहली एटा को पावर रे जीवो प्रेसिडेंट करो मिलिटरी पावर रे जीवो मिलिटरी पावर रे प्रेसिडेंट ही तमरो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस मनला द प्रेसिडेंट कोन करंती ए जो मिलिटरी पावर रे अछि कोन कोन ना मिलिटरी पावर रे मन के फर्स्ट हला प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस सेकंड हला प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस नंबर 3 प्रेसिडेंट विल डिक्लेयर वार एटा बिग क्वेश्चन आसे पिला मादे आसे प्राइम मिनिस्टर बुझबो तो हु डिक्लेयर्स वार क्वेश्चन आसे पिला मार देबे कोन ना प्राइम मिनिस्टर declare war no president declare war on the recommendation of the parliament एटा हला तापर देखो who is known as the sculptor of the constitution of india हम एबे देखिले बी आर अंबेडकर ठीक अछि he is the sculptor of the constitution of india next what is known as the little india हम काउ कहबा विलेज सुडा कहबा क्लियर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15 ठीक है रह जाओ
who decides एबे डिस्कस करले क्वेश्चन नंबर 1 रे ही हमें डिस्कस करछंती who decides the disputes relating to the allotment of symbols to the political parties हमें हमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 रे हमें कहले कोन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ठीक अछि से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट रे हमें देखिले डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस हो कार डिस्क्वालिफिकेशन पार्टीज मान को जदी से रूल उडा भांगुछंती तार डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस हो सेडा सब तमर लिखा है कोठी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 तार रिलेटेड क्वेश्चन देखो एबे से क्वेश्चन पछला हु डिसाइड द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द अलॉटमेंट ऑफ सिंबल हैला मन रखो अलॉटमेंट ऑफ सिंबल माने कोन ना को बार जो तुम कहि परिबो जमति तमरो शंख चिन्ह हो किबा साइकिल चिन्ह हो तो जति गोटे स्टेट रे तमे सिंबल रो डुप्लीकेसी हे परिबो ना बुझेला माने शंख चिन्ह हैला कि साइकिल चिन्ह हैला तमे स्टेट रे डुप्लीकेट करि परिबो नाही हां स्टेट टू स्टेट भितरे डुप्लीकेसी हे परिबो माने को तमे ओडिसा रे हमरो शंख चिन्ह अछि तो तमे बिहार रे भी शंख चिन्ह रखि परिबो पर ओडिसा भितरे तमे डुप्लीकेसी ऑफ सिंबल करि परिबो नाही बुझेला तो ये जो डुप्लीकेसी को चेक करिया पई दैट इज द मेजर फंक्शन ऑफ whom इट इज द मेजर फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन बुझि पारलो इट इज द मेजर फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन तो एठी आंसर हो कोन ना who decides the disputes relating with the allotment of symbols to political parties answer will be election commission बुझियला जानि पारलो ना समझते नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16 the term of member of Rajya Sabha is term of member of Rajya Sabha देखो जनरली हमें बुझो एक क्वेश्चन टिके बुझाउ चेष्टा करो जो माने देखु जो माने देखु न जो पर देखिबो बुझो मने को तमे कहिलो लोकसभा हाउस रो टर्म ता केते वर्ष लोकसभा हाउस रो टर्म ता केते वर्ष इमोशनली समस्ते कहिबे ए लोकसभा हाउस रो टर्म ला 5 इयर्स हैना इमोशनल हबो नाही लोकसभा टर्म रो हाउस रो टर्म ला 5 इयर्स नो इट इज नॉट फिक्स्ड अजति लोकसभा हाउस रो नॉट फिक्स्ड तो लोकसभा मेंबर माने कोन होबे भाई लोकसभा मेंबर माने को भी नॉट फिक्स्ड मन रखिबो हैला सेमती राज्यसभा हाउस रो टर्म ता केते वर्ष ना इट इज ए परमानेंट हाउस ठीक अछि लोकसभा कोन कोंती एटा को मध्य कॉन्स्टिट्यूशनल नेम कोन लोकसभा रो कॉन्स्टिट्यूशनल नेम कोन हाउस ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स एटा का छोट छोट क्वेश्चन लागा मन रखिबे छा आ लोक राज्यसभा रो कॉन्स्टिट्यूशनल नेम कोन काउंसिल ऑफ स्टेट्स अच्छा हम राज्यसभा मेंबर कथा देखिबा राज्यसभा मेंबर उनकर तमरो टर्म ता केते ना दे आर देयर फॉर द टर्म ऑफ 6 years and every second year one third of the members retire हला every second year रे तमरो one third of the member retire करिवे and these retired members are also eligible for re-election please remember this ठीक अछि त एडा सब मन रखले छा ए तमरो ए सब तो जो टर्म ना कहली लोकसभा हाउस रो टर्म इज नॉट फिक्स्ड जमा 5 वर्ष मारियोनी हां जदी चॉइस रे नॉट फिक्स्ड नाही ताहले आंसर होबो 5 इयर्स बुझला ना जदी चॉइस रे तमरो नॉट फिक्स्ड नाही ताहले आंसर होबो 5 इयर्स इन द मेंबर रे भी जदी नॉट फिक्स्ड नाही ताहले आंसर होबो 5 इयर्स अदरवाइज जदी 5 इयर्स भी अछि नॉट फिक्स्ड भी अछि your answer will be not fixed please remember this हैला सेमती राज्य सभा हाउस इट इज ए परमानेंट हाउस राज्य सभा मेंबर तमरो 6 years every second year तमरो one third of the member will retire तो एठी आंसर कोन होबे भाई the term of member of राज्य सभा is it is 6 years हैला बुझि पालो ना वेरी नेक्स्ट देखो who among the following did not who decides whether a bill is money bill or not एबे हम कहले who decides whether a bill is money bill or not पिल्ला इमोशनली मारदे प्रेसिडेंट दया करी तमे मारिबो स्पीकर ऑफ लोकसभा हैला आफ्टर द सिग्नेचर देन ओनली द बिल इज व्हाट द बिल इज मनी बिल ठीक अछि ना तो इसका आंसर करना दो टिके एटा हमरा इलेक्शन कमीशन एटा 6 इयर्स एटा स्पीकर ऑफ लोकसभा हैला नेक्स्ट देखो who among the following
not serve as the vice president before becoming the president of India? What of answer? Nilam Sanjeeva Reddy. है ना? Next देखो, a federal structure of India was first put forward by, a federal structure of India was put forward by, ebbe mu कहली it was first put forward by Act of 19 Government of India Act 1935. है ना? It is a major source of Indian Constitution where 70% of the content was taken from this Government of India Act 1935 to our Indian Constitution. Our Indian Constitution टा कौन है? It is a borrowed constitution. ଆମେ different constitution ରୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ borrow କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ points ଗୁଡାକ ତମର borrow କରିଛନ୍ତି, features ଗୁଡାକ borrow କରିଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଫେଡରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାନେ କଣ ନା ଆମେ ଯୋଉଟା କନସେପ୍ଟ ଏବେ ଦେଖିଲେ ଥ୍ରୀ ଲିଷ୍ଟ ର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ଫେଡରାଲ ଲିଷ୍ଟ, ୟୁନିୟନ ଫେଡରାଲ ଲିଷ୍ଟ, ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଲିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ଆଜିକା ଡେଟ୍ ରେ ତମେ କହୁଛ କଣ ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ ଲିଷ୍ଟ ଆଉ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ, ହେଲା ତାର ସବୁ ଯାକ ଯୋଉ ଫିଚର ଗୁଡାକ ସେଟା ତମର ଲେଖା ହେଇଛି। ତାରି ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ କହୁଛେ କଣ ଫେଡରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, କାହିଁକି ନା ତମର ସେଣ୍ଟର ଆଉ ଷ୍ଟେଟ ଭିତରେ ପାୱାର ଗୁଡାକ ଡିଫାଇନ୍ ହେଇଛି। nobody can interfere in other power, ମାନେ ଷ୍ଟେଟ ସେଣ୍ଟର ପାୱାର ତମର इंटरफेयर करि परिबोनी किबा यूनियन तमरो स्टेट रो पावर रे इंटरफेयर करि परिबो नाही, हला तापर सेट देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1900 तमरो 1909 एक्ट लिखाइ छै। दिस एक्ट इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म, हला इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 तक को है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और दिस इज आल्सो कॉल्ड मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म माने कोन? Morley was the Secretary of State for India and Minto तमरे कोन थिले ना कि तो vice, बुझि पारलो। तो सेही तमे देखिबो कोन ए जो मिंटो he is referred as what? He is referred as the father of communalism। छुआ बड़ पढतो ए जिंस गुडा को मन रखिबो एला father of communalism। काहे कि father of communalism को हला रीजन होची एया जे कोन ना मिंटो कोन करथिले? Minto introduced the concept of separate electorate। Minto introduced the concept of separate electorate, बुझला। तापरे Act of 1919 एटा कोन कोन मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक अछि। एई टाइम रे तमर कोन हेतला? एई एक्ट रो मेन फीचर तमर कोन ना ड्यूरिंग दिस एक्ट द प्रोविंशियल बजट, स्टूडेंट तुम स्टेट बजट बोलो ना, द प्रोविंशियल बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रल बजट। प्रोविंशियल बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रल बजट, एक्ट ऑफ 1919। और एडो केतरा केतरा भी कहा जाय मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म मध्ये कहा जाय। मॉन्टे एटा आसे क्वेश्चन छुआ मॉन्टेग रिफॉर्म को मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाय, ठीक अछि। तो 19 आंसर होबो कोन? सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट देखो 20 क्वेश्चन नंबर 20। which writ is issued by a high court or the supreme court to compel an authority to perform a function that it was not performing, hela which writ is issued by a high court or the supreme court to compel an authority to perform a function that it was not performing। सुनो रे छुआ एटा हला कोन ना आर्टिकल 32 रे मेंशन हेची। आर्टिकल 32 कहा विषय मेंशन करची? इट मेंशन अबाउट द Supreme Court and High Court can issue writs, हला can issue writs। Supreme Court टा आर्टिकल 32 रे लिखा हेची, High Court टा आर्टिकल 226 रे मेंशन हेची। आर्टिकल गुडा मन रखिबो, ठीक अछि। बहुत पढिले आर्टिकल मन रहियो किछ नै। सुप्रीम कोर्ट जो इश्यू करिवो आर्टिकल 32 हिसाब रे, हाई कोर्ट इश्यू करिवो आर्टिकल 226 हिसाब रे, किंतु दीटा का मेंशन हेची कोठी आर्टिकल 32 रे, हला। and who has the higher or the highest jurisdiction with respect to the writ jurisdiction रे more powerful के सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट? एटा आंसर हो हाई कोर्ट। एटा क्वेश्चन आसे, हला। तो जेतल तमे रीट कहउछ ना, ये रीट रे तमरो पांच प्रकार रीट अछि। कोन कोन? हेबियस कॉर्पस, हला। नंबर 2
mandamus. Number 3, sorry, what a minute. Prohibition, ହେଲା number 4, certiorari number 5, equivalent. ठीक है, ये जो प्रोहिबिशन और सर्टियररी देखो बोलते बुझवाड़ा के ये जो प्रोहिबिशन और सर्टियररी ये दीटा को इट इज इशूड बाय ए हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट, हैला इट इज इशूड बाय ए हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट, प्रोहिबिशन और सर्टियररी, हैला ना। तापर देखो ये जो तीनटा रहिला 1 2 और 3 ये गुडा सब कहा पे इशू है, इट इज इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू द पब्लिक ऑफिशियल्स, इटा इंपोर्टेंट मन रखियो, टू द पब्लिक ऑफिशियल्स, इट इज इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू द पब्लिक ऑफिशियल्स, हैला। तो कौन पे ना हेबियस कॉर्पस टा कोन ना हेबियस कॉर्पस है जदी गोटे पब्लिक ऑफिशियल जण को गोटे पर्सन को डिटेन करिछि हला ताहले within 24 hours that person should be forwarded to the court, किंतु 24 घंटा बीती गलानी आ से लोकटा को तमे कोर्ट फॉरवर्ड करिना हो ताहले तम नारे से जो पब्लिक ऑफिशियल अछि ता नारे गोटे केस और ता नारे गोटे जुरिसडिक्शन तमरो गोटे रिट इशू हेजिवो, दैट रिट इज कॉल्ड हेबियस कॉर्पस। सेट पे हेबियस कॉर्पस जगह कोन लिखा जाय, इट इज आल्सो कॉल्ड टू प्रोड्यूस ए बॉडी, हला। मांडामस कोचो मांडामस माने कोन ना मांडामस हला जो पब्लिक ऑफिशियल अछि बुझो, पब्लिक ऑफिशियल जी अछि मन को से तमरो काम करू नाही, ठीक अछि से तमरो काम करू नाही, ठीक अछि, ही इज आस्किंग फॉर ब्राइब, हैला ताहले सेही टाइम रे यू कैन गो अगेंस्ट दैट पब्लिक ऑफिशियल, ता अगेंस्ट रे जीवो जागु को भाई मते ब्राइब होइसे मते ब्राइब मागुची तुमे कोर्ट की जीवो, यू विल गो टू द कोर्ट, तो कोर्ट ता अगेंस्ट उटे नोटिस इशू कर दबो जे अमुक बाबुंगर कामटा 2 दिन भीतर करो नहले भाई तमे सस्पेंड कर दिया जीवो तुमको, ताहले व्हाट कोर्ट इज डूइंग, कोर्ट इज कमांडिंग दैट पब्लिक ऑफिशियल, तो से जो कमांड ता तमर होची ना से कमांड ता तमर कोथरे जीवो मांडामस रे जीवो। देखो तो एठी कोन रहउची एठी एमान जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो नोटिस ता इशू करूछंदी सेटा काहे अगेंस्ट रे इशू करूछंदी, एटा पब्लिक ऑफिशियल अगेंस्ट रे ही इशू करूछंदी, तेनु करी ये तीनटा का तमर पब्लिक ऑफिशियल अगेंस्ट जीवो। आ क्यू वारंट रे कोन ना बाय व्हाट त मांडामस से कोन तमे कोन लिखो टू कमांड, एटा लिखा जाय टू कमांड। आ क्यू वारंट कोन ना भाई तुमको अथॉरिटी के देला, माने सपोज तमे गोटे पोजीशन रे अछ तमे काहा को न जणई करी तमे कोन करो रिक्रूटमेंट बाहर कर दलो, तो से जो रिक्रूटमेंट ता बाहर करलो भाई से रिक्रूटमेंट बाहर करिया पे तुमको अथॉरिटी के देइछि कि नाही, जदि अथॉरिटी देइनी ताहले हाउ यू डेयर टू एडवर्टाइज दिस रिक्रूटमेंट, तो सेही जिंसटा पई ताको नोटिस आसी जीवो, तो सेठी सेही पई क्यू वारंट रो अलगा नाम होउची बाय व्हाट अथॉरिटी, एसो मन रखो छोट छोट जिंसटा को टिकरी मन हैला। जतले हेबियस कॉर्पस कहउछो हेबियस कॉर्पस रे टू प्रोड्यूस ए बॉडी, मांडामस जतले कहउछो ता माने कोन टू कमांड, हैला। क्यू वारंट जतले कहउछो बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक अछि। प्रोहिबिशन जतले कहइबो प्रोहिबिशन हैला प्रोहिबिट माने तमे कोन कलो कोर्ट रु जने स्टे ऑर्डर नै आसीला, हैला बुझुता कोर्ट रु जने स्टे ऑर्डर नै आसी, मने करो स्टे ऑर्डर आनी सरला परे भी इफ द पब्लिक ऑफिशियल्स दे आर इंटरफेयरिंग ता तमे कोन करो स्टे ऑर्डर आनछो कोटु लोअर कोर्ट आनछो हाई कोर्ट आनछो, हैला ना। तो सेठी हाई कोर्ट मन को तम कथा सुनु नाही ताहले देन यू कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, तो सेठी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भितरे झगड़ाटा हो बुझला, तेनु करी कोठी कहली इट इज इशूड बाय ए हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट। सेमती इन केस ऑफ सर्टिलरी मन को सपोज कोन आइची ना गोटे प्रिजनर को हाई कोर्ट कोन करची ना ताकू फांसी दे दिछि, बुझल तो फांसी पय तार ऑर्डर हे जाइछि, क्लियर। किंतु सपोज से जो ऑर्डर ता हेछि से प्रिजनर ता जो हाई कोर्ट अंडर जाय जिबा कथा से हाई कोर्ट अंडर जाइनी आउट को हाई कोर्ट ताकू से ऑर्डर दे दिछि, ऑर्डर ता पास करिछि, तो सेही टाइम रे सुप्रीम कोर्ट कोन करिवो से कंसर्न हाई कोर्ट को
पठेइबो कोन ना भाई तते ये अथॉरिटी के देछि तोर जुरिडिक्शन से तो जाम नहीं तेणु करके तू कोन कर ताको कंसर्न हाई कोर्ट को तार टोटल केस टाको ट्रांसफर कर बुझला तो सेठी से सर्टिफाई करिवो से सर्टिफाई को हम कोन ना दिछंती दैट इज कॉल्ड सर्टिफिकेट तो सर्टिफिकेट कोन हो टू सर्टिफाई एटा हबो कोन प्रोहिबिशन टा टू प्रोहिबिट ये जो छोटो छोटो वर्ड गुडा अछि एटा को ही मन रखिबो हेबियस कॉर्पस हला टू प्रोड्यूस ए बॉडी मांडमस हला टू कमांड क्यू वारंट हला बाय व्हाट अथॉरिटी तो ये तीनटा को कोन ना इट इज इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू द पब्लिक ऑफिशियल्स डायरेक्टली पब्लिक ऑफिशियल्स सहित लिंक हो किंतु प्रोहिबिशन और सर्टिफिकेट रे के पब्लिक ऑफिशियल मध्ये आसीबेनी कोन आसीबे हायर कोर्ट आसीबो और लोअर कोर्ट आसीबो ताको भितरे कथा बार्ता चलिबो बुझला तो ठीक क्वेश्चन देखो कोन पचारची एटा बुझला ना ये पांचटा को ये सब जगह तमरो लिखा है आर्टिकल 32 रे लिखा है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू इट हाई कोर्ट कैन इशू इट सेना को आर्टिकल लिखा है आर्टिकल 226 रे लिखा है एंड रीड जुरिडिक्शन का केवे किए पावरफुल मोर पावरफुल इज हाई कोर्ट इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्लियर तो देखो पे क्वेश्चन नंबर 20 चल क्वेश्चन नंबर 20 कोन कहूची which writ is issued by a high court or the supreme court to compel an authority to perform a function that it was not performing eta koda habo answer habo mandamus clear next देखो the chief election commissioner can be removed from the office chief election commissioner रा appointment process ता की करे president करंती he can be removed by the office on by the president हला next question number 22 देखो if the speaker of lok sabha intends to vacate his office before the expiry of his term ठीक अछि ताहाले से ताकर रेजिग्नेशन ता काहा को देबे एटा एक बढ़िया क्वेश्चन छुआ मार दे आसीबे प्रेसिडेंट को देबे आंसर ऑफ डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोक सभा हला ना मन रखियोडा सब छोट छोट क्वेश्चन गुडा को भलो भलो क्वेश्चन गुडा को डिस्कस करै छी अछि ताकू दया करके टिके देखिबो गुडा डिस्कशन हे छी हला ना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखो रह जा गुड मिनट if the speaker hegala which of the following amendments in the constitution of india are related with the institution of panchayat raj क्वेश्चन देखाउनी एबे क्वाड आइलो एबे तो सरिया को बसिरानी विश्वरंजन एबे उठिलो निद भागिला ना को तमे तो लेट रे आसिलो मु केते डिस्कशन करि सलानी एबे देखाला ए तो सरीबो एबे देखो which of the following amendment in the constitution of india are related with the institution of panchayat raj eta भी हमें देखछंती एटा तमरा 73rd आउ 74th amendment आउरी जूम हो the answer होबो कोन both 3 and 4 ठीक अछि next the first 5-year plan in india was launched in the year 1951 ठीक अछि and the जदि से एटा तो फर्स्ट 5-year plan से पचारला किंगल से पचारिबो planning commission के बे एस्टैब्लिश हेतला planning commission was established in 1950 ठीक अछि सातटारो बसी करी मो चलै छै डिस्कशन केही ना माने से जो एडवर्टाइज थिला कॉफी रो सबले से सकाळो आसी करी से सबले कहबो कोन ना आसो मो वीडियो देखो मोर कथा सुनो किंतु
के आसीबेनी जो कॉफी पीबो ता समस्त आसीबे जान मोर भी सेंती अवस्था सकाळो के आसे नै कोन चाली छी छाड़ बोर माने चलले हला क्वेश्चन नंबर 24 बुझ परलो प्लानिंग कमिशन जदि पचारला से प्लानिंग कमिशन रो आंसर हबो कोन 1950 हां देखो हु इज द चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया हम जानछंती अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 78 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अटॉर्नी जनरल रो क्वालिफिकेशन कोन ना ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया एटा तो छाड़ो एटा तो समस्त जानछंती किंतु सेकंड हला he must be eligible हैला ना he must be eligible to be the judge of the supreme court एटा इंपोर्टेंट हैला ना he must be eligible to be the judge of supreme court किछि असुविधा टेंशन नेना चालू करी नेक्स्ट who prepared the first draft constitution of india एटा आंसर कोन who prepared the first draft constitution of india एटा आंसर हबो advisory branch of constituent assembly clear how next who was the chairman of the draft committee of the constituent assembly who was the chairman of the draft committee हमें ऑलरेडी देखिले बे सातटा मेंबर को नाम भी कहि देली तो आंसर हबो कोन बी आर अम्बेडकर क्लियर 28 29 30 think of yes politics when did the constituent assembly adopt a national flag adopt केबे करथिला तमरो constituent assembly 22nd जुलाई 1947 हां very good ताबरे who was the last british governor general who addressed the constituent assembly lord mountbatten and when was the constitution of adopted the when was the constitution adopted the constituent assembly it about kono 26th november 1949 clear ठीक है so this is all about छाड़ दे पर देखियो नले कोन करे